Hello everyone, today we have the topic attention deficit disorder. So here is the definition. Attention deficit hyperactivity disorder is a childhood disorder characterized by persistent pattern of inattention and hyperactive and impulsive behavior. Alright. So what is the definition? By what is ADHD? ADHD means attention deficit hyper activity disorder is a childhood disorder characterized by persistent pattern of inattention. Okay, so this is the attention deficit disorder is a childhood disorder. It is a childhood disorder characterized by persistent pattern of inattention. It is a characterized by persistent pattern of inattention and hyperactive and impulsive behavior as well as impulsive behavior. Alright. So affected children commonly experience academic underachievement. Affected children commonly experience first is the academic underachievement. एकेडमिकली जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें उनका अंडर अचीवमेंट होना, प्रॉब्लम्स विद द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर एंड पीयर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होना, प्रॉब्लम विद द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स होना विद फैमिली मेंबर एंड पीयर ग्रुप में एंड फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम होना, लो सेल्फ स्टीम होना. एडीएचडी ऑफन को ऑक्यूर विद द अदर इमोशनल बिहेवियरल language and learning disorder. Okay, so ADHD often co-occur with other emotional. It is also associated or co-occur with the other emotional behavioral and language learning disorder. Alright, so other emotional behavioral language and learning disorders also associated with it. Next, say epidemiology. Epidemiology, about 5% of children and about 2.5% of the adult have ADHD. Okay, so about 5% of children and about 2.5% of adult have ADHD. तो 5% चिल्ड्रन में एंड 2.5% एडल्ट हैव ADHD से सफर करते हैं. दिस इज एपिडेमियोलॉजी. प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया 11.32% मोर प्रिवलेंट इन दी बॉयज. अभी बॉयज में ज़्यादा होता है ADHD एंड प्राइमरी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं इनमें 11.32% होता है एंड 5% होता है चिल्ड्रन अबाउट विथ, जो चिल्ड्रन होते हैं अबाउट 5% होता है एंड अडल्ट में होता है 2.5%. मोर प्रिवलेंट होता है बॉयज में देन गर्ल्स में. Risk factor है first genetic. Sibling with the ADHD, identical twins have greater chance to develop ADHD. Okay, so risk factor आपके genetic risk factor हो सकते हैं. सिबलिंग विथ ADHD, जो सिबलिंग्स होते हैं विथ ADHD है तो उनमें चांसेस होता है होने का. आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं हैव ग्रेटर चांस टू डेवलप ADHD, तो ट्विंस में एक ग्रेटर चांस हो सकता है ADHD के डेवलप होने का. सेकेंड वन इज द न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो सकता है लो लेवल ऑफ डोपामिन होना, cause hyperactivity and impulsivity. Okay, so neurotransmitter, what is neurotransmitter? low level of dopamine. dopamine का low level होने की वजह से जो कि cause करता है आपको hyperactivity and impulsivity, and norepinephrine cause inattention, and norepinephrine cause करते हैं आपको inattention. ओके, सो न्यूरोट्रांसमीटर लो लेवल ऑफ डोपामिन, डोपामिन का लो लेवल होने की वजह से कॉज करता है आपको हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिबिलिटी, एंड नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से कॉज होता है आपको इनअटेंशन, अटेंशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाना. सो दिस इज द रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ADHD आपको हो सकता है. और कौन कौन से इसमें आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? थर्ड वन इज दी पेरीनेटल फैक्टर. कुछ आपके पेरीनेटल फैक्टर होते हैं. पेरीनेटल फैक्टर में आपका आता है मैटरनल स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के समय पर स्मोकिंग होना, स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल का यूज करना मदर को, लेडीज को, इसकी वजह से आपको हो सकता है. एट दैट टाइम जब मैटरनल एज था, जब जेस्टेशन एज थी, उस समय पर स्मोकिंग करना और अल्कोहल का यूज करना ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सपोजर टू दी लेट, राइट. प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल एक्सपोजर होना लीट के साथ एक रीजन ये भी हो सकता है. बर्थ कॉम्प्लिकेशन होना, किसी प्रकार का भी बर्थ कॉम्प्लिकेशन है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है.
प्रीमेच्योर बर्थ होने की वजह से हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ मीन्स कि बिफोर 9 मंथ में बर्थ होना, 7 या 6 मंथ में बर्थ हो जाना, दिस इज कॉल्ड प्रीमेच्योर बर्थ। तो इस रीजन की वजह से भी ये समटाइम्स हो सकता है। नेक्स्ट साइकोसोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि डिसऑर्गेनाइज फैमिली पैटर्न, फैमिली का जो पैटर्न है वो डिसऑर्गेनाइज होना, मैटरनल मेंटल हेल्थ का चेंजेस होना, एल्कोहलिज्म इन द पेरेंट्स, पेरेंट्स में एल्कोहलिज्म होना, ग्रोइंग अप इन द इंस्टीट्यूशन फोस्टर होम्स, ग्रोइंग अप इन द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में ग्रोन अप होना, ग्रोइंग अप होना, दिस इज द रीजन हो सकता है। फोस्टर होम, होम्स में जो है प्रॉपर फोस्टर केयर नहीं होने की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर आपका हो सकता है। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो देर आर दी थ्री मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव, सेकंड है हाइपर एक्टिव एंड थर्ड वन द कंफाइंड टाइप। फर्स्ट टाइप होता है इनअटेंटिव टाइप। इनअटेंटिव सिम्टम ऑफ इनअटेंशन। इनअटेंटिव टाइप का जो जिस पर्सन को भी होता है, इसमें जो सिम्टम होते हैं ये जो होता है 7% के आसपास होता है। 30% जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, कंबाइन होता है वो 70% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो जो इन अटेंटिव टाइप है, इसमें क्या होता है, सिम्टम ऑफ इन अटेंशन, इसमें अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाना, हाइपर एक्टिव होना, अटेंशन का फोकस कंसंट्रेशन नहीं हो पाना। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स और हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है, एंड इम्पल्सिव आपका बिहेवियर होता है किसी भी चीज को लेकर के बहुत जल्दी रिएक्ट करना, इम्पल्सिव हो जाना, जल्दी से इम्पल्सिव होना, दिस इज द इम्पल्सिव टाइप। ओके, नेक्स्ट है कंबाइंड टाइप। कंबाइंड टाइप में क्या होता है, बोथ इन अटेंटिव एंड हाइपर एक्टिविटी। कंबाइन में क्या होता है, बोथ इनअटेंटिव भी होता है और हाइपर एक्टिविटी भी होता है। तो अडल्ट में ये वाला केस है, कंबाइन बनना ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा इनअटेंटिव मिलता है, उसके बाद आता है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। So all these are the type. We are discussed about the type. Now we are talk about clinical feature of attentive deficient hyperactivity disorder. So next clinical feature, first poor attention span and distractibility. Okay, so इसमें क्या होना है आपका, poor attention span होना and distractibility होना, inability to complete the task from start to the end। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में इनेबिलिटी होना, इनेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट तो किया पर उसको एंड नहीं कर पाना, बीच में उसको जंप कर देना वन टास्क टू अनदर टाइम बिकॉज ऑफ द अटेंशन फोकस नहीं हो पाना। इजिली डिस्ट्रैक्टेड होना, कांट सस्टेन अटेंशन, अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाना, केयरलेस होना, मिस्टेक होना, लैक ऑफ डिटेल इन दी वर्क, वर्क की डिटेल में लैक होना, प्रॉपर डिटेल्स ना होना, हैव ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क, टास्क को ऑर्गेनाइज करने में ट्रबलिंग होना, प्रॉब्लम होना, प्रॉपर टास्क को ऑर्गेनाइज ना कर पाना। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या हो सकता है आपका, पुअर अटेंशन स्पैन एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। अटेंशन स्पैन का पुअर होना, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होना, लॉसेस बिलोंगिंग फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली लॉस होना, बिलोंगिंग का फ्रीक्वेंटली लॉस होना, डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में डिफिकल्टी होना, टीचर या पेरेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो ना कर पाना, उससे डिफरेंट वे में रिएक्ट करना। दे अंडर अचीव इन एरियाज ऑफ द लाइफ वेयर दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टैलेंट सच एज इन academics, in their profession, in athletics। Okay, so they underachieve in areas of life where they have a lot of potential and talent। They underachieve in areas of life, underachieve होना areas in life, they underachieve in areas of life where they have a lot of potential। Okay, so they underachieve in areas of life, उस areas of life में underachieve होना, they underachieve in areas of life where they have a lot of potential। ओके, जहाँ पर lot of potential होना चाहिए वहाँ पर आपका underachieve होना, and talent such as academic हो गया, their profession हो गया, their athletics हो गया। एथलेटिक्स में, प्रोफेशन में, एकेडमिक्स में अंडर अचीवमेंट होना, पोटेंशियल प्रॉपर नहीं हो पाना,
इसमें प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाना, प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट ना कर पाना। क्लिनिकल फीचर क्या है इसका, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिबिलिटी, फिजिकल एंड नॉन वर्बल ओवर एक्टिविटी। ओके, तो हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको, फिजिकल और वर्बल ओवर एक्टिविटी, फिजिकल एंड और वर्बल ओवर एक्टिविटी होना, अपेयर टू बी इन कांस्टेंट मोशन एंड नॉन ऑन दी गो। ओके, अपेयर टू बी इन दी कांस्टेंट मोशन में अपेयर होना एंड ऑन दी गो अपेयर होना, एज इफ ड्रिवन बाय द मोटर। ओके, difficulty keeping their bodies still, difficulty keeping their bodies still, bodies को keep करने में difficulties होना, still moving about excessively, screaming और feet getting hands and feet। Okay, so difficulty keeping in their bodies still moving about excessively, excessively उसको क्या करना, स्क्विमिंग करना, फिट गेटिंग करना हैंड्स को एंड फीट को, एंड मीन्स कि हाथ पैर को जो सीधा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्क्विमिंग करना, उनको इधर उधर हिलाना डुलाना एक्सेट्रा, हाथ और पैर को छोटे बच्चों में। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिटी के अंडर फर्स्ट है रेस्टलेस बिहेवियर, बिहेवियर है जो वो रेस्टलेस होना, बिहेवियर में आपका रेस्ट नहीं होना, एक जगह पर बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली करते रहना, बहुत ज़्यादा बात करना, टॉक एक्सेसिवली, इंटरप्ट अदर, अदर लोगों को इंटरप्ट करना किसी भी एक्टिविटीज में, नॉट लेटिंग अदर्स टॉक, राइट, किसी व्यक्ति को भी बात नहीं करने देना, है ना, एंड बीच में इंटरप्ट करना, ब्लर्ट आउट द एन आंसर, कोई भी आंसर उसको ब्लर्ट आउट करना, कांट रिमेन सीटेड एट स्कूल और वर्क प्लेस पर और स्कूल पर एक जगह पर बैठे नहीं रहना, इधर उधर चलते फिरते घूमते रहना, हैज डिफिकल्टी वेटिंग हिज और हर टर्न और वाइल वेटिंग इन द लाइन, हैज डिफिकल्टी फॉर वेटिंग, जब लाइन में लगे हों वेटिंग लाइन में तो वेटिंग करने में डिफिकल्टी होना, हिज और हर टर्न आने तक, और वाइल वेटिंग इन दी लाइन, जब भी लाइन में वेट कर रहे हैं तो जनरली हम जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, हमारा टर्न आएगा, हमारे अभी हम वेटिंग में, तब हम जो भी है वो हम परफॉर्म करेंगे टर्न आने पर, लेकिन उनको डिफिकल्टी होना वेटिंग करने में, और हिज और हर टर्न आने से पहले ही उसको ईगरनेस होना। ओके, सो डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी में हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, डीएसएम 5 में हम इसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें A1 आता है आपका इनअटेंशन का, persisted persisted for at last 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that negatively impact direct on social and academic occupational activities। Okay, so persistent for at least 6 months to a degree that persistent behavior होना for at least 6 months to a degree that inconsistent with developmental level and that negatively impact directly on social and academic occupational activities, lack attention to detail, make careless mistake, has difficulty sustaining attention, doesn't seem to listen, fail to follow through, fail to finish instruction or school work, has difficulty organizing tasks, avoid tasks requiring mental effort, often loses item necessary for completing a task, easily distracted, is forgetful in the daily activities. Put it. Next set diagnosing ADHD, DSM-5, hyperactivity, impulsivity, A2. Okay. Next step persisted for at least 6 months to a degree, persisted for at least 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that negatively impact directly on social and academic occupational activities। Okay, so persisted for at least 6 months, 6 months से persisted होना, similarly and इसमें और क्या होता है, feed it or scream excessively, leave seat when inappropriate, run about, climbs excessively when inappropriate, has difficulty playing quietly, often on the go or driven by the motor, talk excessively, blurt out answer before question is finished, cannot await turn, interrupt or intrudes on others। Next one is the diagnosing ADHD DSM-5,
Several inattentive or hyperactive impulsive symptoms were present prior to age 12, where several inattentive or hyperactive impulsive symptoms are present in two or more settings. Okay, so several inattentive or hyperactive impulsive symptoms are present in two or more settings. There are must be clear evidence of clinically significant impairment in the social, academic, or occupational functioning. Okay, so there must be a clear evidence of clinically significant, clear evidence होना आपका clinically significant का impairment in the social, academic, or occupational functioning में. Next, these symptoms do not occur exclusively during the course of pervasive developmental disorder, schizophrenia, or other psychotic disorder, and are not better accounted for by abnormal mental disorder, example mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, personality disorder, etc. Got it? Okay, next one is the pharmacological management, stimulant to reduce hyperactivity and impulsivity and increase attention, methyl phenidate and amphetamines. Okay, so stimulate to reduce hyperactivity, pharmacological management is there, stimulate to reduce hyperactivity को स्टिमुलेंट को रिड्यूस करने के लिए, इम्पल्सिबिलिटी एंड इंक्रीज अटेंशन जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं मिथाइल फेनिडेट एंड एम्फीटामाइंस. नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस में आपका आता है एटो एटोमोसेटिन एंड bupropion. Okay, atomoxetin and bupropion. Next, management of behavioral therapy, teaching the child time management and organization of the skill, example following structure routine. Okay, teaching the child and time management and organization of skills, example following structure routine can be given in the classroom, at the home, special education if required, social skill training. Is that okay? Next one is the management, effective parenting, make clear schedule, parent have make a clear schedule for their activities, for their daily routine, ADL's activity of daily living, maintain routine, proper maintain of the routine, patient should instruct the child to maintain proper routine, make sure instruction are the understood, use simple word and demonstrate. Okay, so make sure instruction are the understood, जो भी instruction दिए it should be understood by the child, use simple word and demonstrate, you have to demonstrate, you have to use the simple word so that children are the understood properly. Next, focus on the child when talking to him or her, avoid multitasking, make sure instruction are the understood, use simple word and demonstrate. You have to make sure जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो क्लियरली अंडरस्टूड हो, इस जो आपका चाइल्ड है वो क्लियरली उसको समझ पाए, सिंपल वर्ड का यूज करना है और उसे डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है. फोकस ऑन द चाइल्ड व्हेन टॉकिंग टू हिम और हर, अवॉइड मल्टीटास्किंग. फोकस ऑन चाइल्ड व्हेन टॉकिंग टू हिम और हर, जब भी उससे टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो फोकस करना है, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि वो एक समय पर एक ही टास्क को परफॉर्म करे, डू नॉट परफॉर्म ए मल्टीटास्क, दे हैव टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड complete it without the interruption, it's start to end. Okay, so they have to complete their task. Next, the management में effective parenting, children with the ADHD may require more supervision than their peers. Okay, so children with the ADHD may require more supervision, they require more supervision than their peers, as per जो normal peers है उससे ज़्यादा इनको requirement होती है. Then maintain communication with the child's and teacher, maintain communication with the child's teacher, maintain communication with child's teacher.
You have to maintain proper communication with the child and teacher, model calm behavior, and focus on effort and reward good behavior. Okay, focus on effort and focus on the effort and reward for the good behavior. They behave good, then we have to give the reward for them. Okay. So thank you. Hope you got it. You understood this everything. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Let's quickly sum up. So यहाँ पर हमने देखा ADHD के बारे में, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में जाना, रिस्क फैक्टर के बारे में जाना, कॉजेस के बारे में जाना, एंड इसके टाइप्स के बारे में भी यहाँ पर हमने देखा. गुड इट. Okay, so attention deficit hyperactivity disorder is childhood disorder characterized by persistent pattern of inattention and hyperactive and impulsive behavior. Okay, so it is persistent pattern of hyperactive and impulsive behavior. It is known as hyperactivity disorder. Attention का deficit होना. देर आर बी थ्री टाइप. यहाँ पर थ्री टाइप्स के आपके अटेंशन डेफिसिट होता है. अफेक्टेड ये करता है कॉमनली आपका परफॉर्मेंस लाइक एकेडमिक अंडर अचीवमेंट होना, प्रॉब्लम विद दी IPR प्रॉब्लम होना, विद फैमिली मेंबर एंड पीयर्स, लो सेल्फ स्टीम होना, एंड ऑफन को अक्यूर विद द अदर लाइक इमोशनल बिहेवियर लैंग्वेज एंड लर्निंग डिसऑर्डर के साथ भी इंक्लूड हो सकता है. ADHD में को अक्यूर आपका हो सकता है. इपिडेमोलॉजी में देखा जाए तो 5% होता है चिल्ड्रन में, 2.5% होता है अडल्ट में, एंड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन में होता है 11.32. मोर प्रिवलेंट होता है बॉयज में देन कंपैरिजन टू गर्ल्स. रिस्क फैक्टर होते हैं जेनेटिक हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो सकता है, पेरीनेटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, एंड साइकोसोशल फैक्टर की वजह से हो सकता है. एंड टाइप्स में है inattentive, hyperactive, impulsive type, confined type. Alright. So there are the three type, and clinical features are poor attention span and distractibility, inability to complete tasks from start to end, easily distracted, can't sustain attention, careless mistake, lack of detail in the work, have trouble organizing the task. Poor attention span में next losses belongingness, frequently difficulty following instruction. They underachieve areas of where they have a lot potential and talent, such as academic, their professional and athletics. Next है physical and verbal overactivity, appear to be constant motion on the go, difficulty in keeping their bodies still moving, excessively screening feeding है, पैर को हिलाना इधर उधर मूव करना, सिंपली सिटिंग ना रहना, रेस्टलेस बिहेवियर होना, टॉक एक्सेसिवली, इंटरप्ट अदर, नॉट लेटिंग अदर टॉक, लोगों को बोलने नहीं देना, बीच में इंटरप्ट करना, कांट रिमेन सीटेड, एक जगह पर बैठे नहीं रहना, वर्क प्लेस पर और स्कूल में, हैव डिफिकल्टी वेटिंग हिस और हर, अपने टर्न को वेट करने में डिफिकल्टी होना, बीच में ही या फिर लाइन में लगे हैं तो लाइन को भी ब्रेक करना. परसिस्टेड फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ये जो सिम्टम है ये देखने को मिलना, इनकंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंटल लेवल के साथ साथ नेगेटिवली इम्पेक्ट करना डायरेक्टली ऑन सोशल एंड एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज पर. डायग्नोसिस DSM-5 A2 सिमिलरली देयर. एंड नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर जो ना मेडिकेशन में फार्माकोलॉजिकल में आपका methylphenidate and amphetamines. This is two medication we have to provide, and atomoxetin and bupropion. ये मेडिकेशन है जनरली हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं. बिहेवियरल थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं, रिक्वायर सोशल स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को. इफेक्टिव पेरेंटिंग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. इफेक्टिव पेरेंटिंग होना पेशेंट का टीचर के बीच और चाइल्ड का मदर फादर के बीच. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.